dear students. Dear students, in the previous class we have talked about the different types of diseases that are caused by different organisms. But all those diseases that we had discussed till the previous classes were the types of communicable diseases. That is the one which spreads from a person to person, or it will spread from person to another person with some intermediate vector involved. Then after we have moved on to the topic of the non-communicable diseases. These non-communicable diseases will not spread to other people. Instead, the only person who is suffering from the disease is going to be affected. In non-communicable disease, the very first disease that we had talked about was the hyperglycemia, that is diabetes mellitus. We said that diabetes mellitus can be of two types, either insulin dependent diabetes mellitus or non-insulin dependent diabetes mellitus. In both the cases, whether it is the deformity of the beta cells to produce insulin, or if insulin is produced but it is not responsible for transporting the glucose into the cell or unable to transport the glucose into the cell, in any of the cases the blood sugar level or blood glucose level is going to increase. Due to increase in blood glucose level, more amount of glucose will be detected in the blood as well as in the urine. Excessive urination was one of the common symptoms in diabetes mellitus. Here, another thing that happens is, instead of glucose, the cells start utilizing proteins and fats for the oxidation and generation of energy. And therefore, it was found that people will be having ketonuria, that is more amount of ketone bodies in the urine can also be detected in this disease. So, diabetes mellitus was one type of non-communicable disease. Here we are going to talk about some other non-communicable diseases. For example, the cardiovascular diseases, right? So, these are the diseases that are associated or affecting the heart and the blood vessels. So, second we are going to talk about cardiovascular diseases. The cardiovascular diseases are those diseases which will be affecting the heart and the blood vessels. So first we will mention they affect the heart and blood vessels. So two things are going to be affected in the case of cardiovascular diseases. One is the heart and the second is the blood vessels, either associated with the heart or any other blood vessels of the body. Now these cardiovascular diseases are mainly the heart diseases which can be of three types. So first we are going to talk about hypertensive heart diseases. Cardiovascular diseases includes mainly three types of heart diseases. One is the hypertensive heart diseases, other will be the heart diseases in which it involves the angina pectoris, like pain in the chest or other type of diseases that are included in it. Even it will be including the diseases like rheumatic heart diseases. Okay, so there are different types of heart diseases also. So first we are going to talk about the hypertensive heart diseases. Hypertensive heart diseases includes the first one, that is called arteriosclerosis. The first disease involved is arteriosclerosis. In arteriosclerosis, we are going to talk only in brief about all these diseases, okay. So arteriosclerosis is a disease in which
there will be the blood vessels which are associated with the heart or any other artery of the body is going to become hard and stiff. So there will be hardening of the artery, and this artery will lose its elasticity. So what is going to happen? The artery is going to become very hard due to deposition of calcium and other substances, and after becoming hard, this artery also loses its elasticity. As it loses its elasticity, obviously the transport of the nutrients and everything is going to be hindered, and thus it is a very serious case in which the arteries can even break. So in extreme cases, the artery can even break. So such a disease in which the arteries become hard, stiff and lose their elasticity is a condition which is called arteriosclerosis. The second hypertensive heart disease that includes the atherosclerosis. Atherosclerosis is a disease in which there is thickening observed in the arteries. Arteries become thick due to deposition, that is deposition of the cholesterol in the inner wall of the arteries. तो arteries की जो inner wall होती है वहाँ पे thickening हो जाती है due to deposition of cholesterol and other salts. थिक हो जाने की वजह से arteries का dilation बहुत ही कम हो जाता है, and we know that arteries are for the transport of the nutrients and oxygen. Now if there is thickening, the flow of blood is going to be affected, and flow of the blood is going to decrease, and therefore many muscles will remain deprived of the enough amount of the oxygen and the nutrient supply. So here also it is a very serious case, that is of atherosclerosis. So in atherosclerosis we will simply mention thickening of the arteries inner wall due to deposition of cholesterol. So there will be thickening. So wall is going to become thick, and therefore it is less dilation, and as there will be dilation means arteries would not be able to dilate properly, and therefore flow of the blood will be decreased. Flow of blood is decreased in such cases. Okay, so arteriosclerosis में क्या हो रहा है कि आर्टरी जो है वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर रही है, ठीक है, जबकि एथेरोस्क्लेरोसिस जो है उसमें आर्टरी इलास्टिक तो है पर अब वो डायलेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि अंदर क्या हो चुका है, डिपोजिशन हो चुका है कोलेस्टेरॉल का, और जिसकी वजह से ब्लड जो है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं हो रहा, एंड देयरफॉर ब्लड विल नॉट रीच द ऑल द टिश्यूज एंड मसल्स प्रॉपरली, so the all tissues will become deprived of the nutrients and the oxygen. So that can be a condition called atherosclerosis. The third hypertensive heart disease is hypertension, or you can simply say blood pressure. Hypertension or blood pressure is a disease which will occur when the blood pressure is over 120 by 80, that is systolic and diastolic blood pressure is above 120 and 80 for prolonged time. So for a longer time interval, if you go for checking for once or twice, or even if you check on the different intervals of the daytime, you get your blood pressure more than 130 or more above 120 and 80 for a longer time, then it indicates the hypertension.
So hypertension is one such condition. If it is not treated, it can affect vital organs. It can affect vital organs and result into kidney failure, or we can say renal failure, heart failure, and even brain stroke. Okay, so kidney failure, heart failure, or brain stroke, right? That is cerebrovascular disease. Anything can occur in the case of the high blood pressure. Most of the time, the reason of high blood pressure is known, but in certain cases, it can also be found that reduction in the amount of the salts in the body can help in reducing the blood pressure. Moreover, it is also seen that sometimes the high blood pressure is due to excessive production of epinephrine by the medulla. So, adrenal medulla, when produces more amount of epinephrine or more amount of renin produced from the kidneys, can also be responsible for higher blood pressure. Okay, so there can be other reasons for blood pressure also. So that was all the three types of hypertensive heart diseases. Other heart diseases that are very important to understand is rheumatic heart disease. The rheumatic heart disease is commonly found in the children below 20 years. It is found in the children below 20 years. And rheumatic heart disease is due to often failure of one or two heart valves. So it occurs due to failure of one or two heart valves. Either it can be a mitral valve or it can be aortic semilunar valve. Okay, तो जब हार्ट के valves में डिफेक्ट हो जाता है तो it can result into the rheumatic heart diseases. ये rheumatic heart diseases जो है, in this what symptoms are observed? Symptoms like fever, or you can say pain in joints, anxiety, restlessness, राइट फीवर हो सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, जॉइंट्स में पेन हो सकता है, या तो फिर एंजाइटी, राइट, एक्सेसिव नर्वसनेस, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, वॉमिटिंग, एज वेल एज रेस्टलेसनेस मतलब घबराहट. ये सारी चीजें हो सकती है इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द रूमेटिक हार्ट डिसीज. तो ये सारे डिसीजेस कम्युनिकेबल नहीं होते. स्टिल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम मोर हार्ट डिसीजेस and then after we are going to talk about the brain stroke as well as some other non-communicable diseases. So in non-communicable diseases we have talked about the coronary heart diseases, we have talked about the rheumatic heart diseases as well as hypertensive heart diseases. Now we are talking about the third, that is coronary heart diseases. So coronary heart diseases, coronary heart diseases. Now what does this mean? Coronary heart diseases involves the deformity that has happened in the coronary arteries. कॉरोनरी आर्टरीज जो होती हैं ये बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरीज हैं क्योंकि ये ब्लड सप्लाई करती है टू द मसल्स ऑफ द हार्ट. सो कॉरोनरी आर्टरीज सप्लाई ब्लड to the muscles of heart. This clearly means that it will be supplying the oxygen and nutrients to the muscle cells, right, of the heart,
and it will be taking in turn the metabolic waste like कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो मसल सेल से बना है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है that will be delivered to the coronary artery which will bring it to the heart back. तो इसका मतलब ये है कि कोरोनरी आर्टरीज हार्ट तक ब्लड पहुंचाती है और साथ में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन जो है वो भी पहुंचाती है. तो जब ये कोरोनरी आर्टरीज में ही कोई डिफेक्ट हो जाता है तो उसे कहा जाता है कोरोनरी हार्ट डिसीजेस. सच डिसीजेस आर नोन एज कोरोनरी हार्ट डिसीजेस. देखिए, हाइपरटेंसिव हार्ट डिसीजेस जो थे उनमें क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर वेरी हो जाता है. क्योंकि ब्लड प्रेशर इसीलिए वेरी हो जाता है क्योंकि आर्टरीज जो है वो आइदर थिक हो चुकी है या तो हार्ड और स्टिफ हो चुकी है. ठीक है. रूमेटिक हार्ट डिसीज में हार्ट के वाल्व्स अगर डिफेक्टिव हो तो रूमेटिक हार्ट डिसीज होता है. और कोरोनरी हार्ट डिसीज तब होता है जब कोरोनरी आर्टरीज अफेक्ट होती है तो कोरोनरी हार्ट डिसीज होता है. सो ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट, राइट? ऑल ऑफ देम आर एसोसिएटेड विद ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, बट ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट. तो यहाँ पे कोरोनरी हार्ट डिसीज में क्या इंक्लूड होगा, तो सबसे पहले जो इंक्लूड होगा दैट इज एंजिना पेक्टोरिस. Angina pectoris is a coronary heart disease in which there is pain in the chest. Okay, usually it begins, pain is going to begin at center of heart and then spreads to the left arm. So it is going to start from the center and then after the pain is going to extend towards which side? Left side of the body. So this is just for a short time. Angina pectoris जो है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है और एक immediate chest pain हो जाता है जिसमें, और फिर वो पेन लेफ्ट आर्म की तरफ एक्सटेंड हो जाता है, but it is for only short duration. So that is a disease known as angina pectoris. The other disease that can be included in the coronary heart disease is coronary thrombosis. Coronary thrombosis is a lump or a clot that has formed in the coronary artery. So there is lump or a clot formed in कोरोनरी आर्टरी. अब अगर कोरोनरी आर्टरी जो है जो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई कर रही है और उसी में अगर क्लॉट हो चुका है तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर कैन बी रिड्यूस्ड फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट. अगर हार्ट को ही इनफ ब्लड नहीं मिल रहा तो ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट इनटू मायोकार्डियल इन्फेक्शन व्हिच इज नोन एज हार्ट अटैक. सो हियर blood supply to heart is decreased. हार्ट को इनफ ब्लड ही नहीं मिल रहा, राइट, पंप करने के लिए. तो हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा, इसका मतलब क्या होगा, देयर विल बी मायोकार्डियल infarction which is known as heart attack. So if there is any type of clot or any type of lump that is observed in coronary artery, so heart is not getting enough amount of blood and therefore what can happen is that it can result into the heart attack. In extreme cases it can also result into brain stroke. Okay. So next is after coronary heart diseases, next we are going to talk about the cardiovascular diseases. We are going to talk about the stroke or you can say brain stroke. अब brain stroke कब होता है? When the artery supplying blood to the part of brain is blocked. ब्रेन स्ट्रोक कब होता है कि जो आर्टरी
ब्रेन को ही ब्लड सप्लाई कर रही है, ब्रेन के एक पोर्शन को ब्लड सप्लाई कर रही है, जब वही आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इट कैन अफेक्ट द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन के जो नर्व सेल्स हैं उन्हें इनफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलता, और उन्हें अगर ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि जो ब्रेन जो है इट इज नॉट गोइंग टू फंक्शन प्रॉपरली, एंड दिस इज नोन एज द ब्रेन स्ट्रोक. So brain stroke can also occur as a non-communicable disease. Other non-communicable disease that we can understand is the different types of arthritis. Different types of arthritis is also a disease which is considered as a non-communicable disease. Arthritis में क्या आता है? तो arthritis में आप consider कर सकते हो rheumatoid arthritis, right? You can consider osteoarthritis or you can consider gouty arthritis. Rheumatoid arthritis कब होता है? तो it is a very leading disease that is observed in most of the people. Rheumatoid arthritis में आपके जो joints होते हैं, right? Mainly जो knee joints होते हैं, वहां पे जॉइंट्स पे एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड बनाती है जो दो बोन्स के बीच में रहता है. मतलब यहाँ पे अगर ये एक नी है, नी जॉइंट है, तो यहाँ पे होते हैं लिगामेंट्स, और यहाँ पे एक कार्टिलेज होता है, और कार्टिलेज के सराउंडिंग होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन. तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो है, साइनोवियल मेम्ब्रेन गेट्स इन्फ्लेम्ड. साइनोवियल मेम्ब्रेन का क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब स्वेलिंग हो जाता है. जब स्वेलिंग हो जाता है तो एक्सेसिव साइनोवियल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड. एक्सेसिव साइनोवियल फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड. अगर साइनोवियल फ्लूइड ही एक्सेस में बन चुका है तो एक्सेसिव साइनोवियल फ्लूइड क्या करता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग ऑफ दैट जॉइंट. Moreover, there is development of a hard tissue which is going to grind the whole cartilage that is present between the two bones. So a hard tissue develops. A hard tissue develops and removes the articular cartilage at the joint. तो जहां पे joints है वहां पे क्या होता है कि दो bones के ends पे articular cartilage होती है, मतलब हाइलिन कार्टिलेज होती है, जिसकी वजह से वो बोन्स अगर रब भी हो तो फ्रिक्शन की वजह से डैमेज नहीं होगा. पर क्या होता है कि ये जो हार्ड टिश्यू बन चुका है वो हार्ड टिश्यू रिप्लेस कर देता है इस आर्टिकुलर कार्टिलेज को, और रिप्लेस कर देने की वजह से ही अल्टीमेटली दो बोन्स जो हैं दे विल रब अगेंस्ट ईच अदर एंड देयरफॉर इट विल बी कॉजिंग एक्सेसिव पेन ऑफ द जॉइंट्स. This is the second leading form of arthritis that is found in the people. तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो एक ऑटो इम्यून डिसीज है. ठीक है, ऑटो इम्यून डिसीज है. Other disease that can be considered is the osteoarthritis. This is the first leading cause of the arthritis. मतलब जॉइंट्स में पेन होने का सबसे पहला रीजन जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो मैक्सिमम 70 to 80% पीपल में देखने को मिलता है. Osteoarthritis is also the pain in the joints due to removal of articular cartilage at joints. तो जब joints पे कार्टिलेज जो है वो जब रब हो जाती है, घिस जाती है, राइट, क्योंकि अगर दो बोन्स हैं तो उनके एंड्स पे कार्टिलेज है, पर ड्यू टू एक्सेसिव वर्क, एक्सेसिव चलने की वजह से, एक्सेसिव एक्टिविटीज की वजह से क्या होता है कि कार्टिलेज जो है वो रिमूव हो जाती है या तो धीरे धीरे
घिस जाती है और इसी की वजह से दो जो बोन्स हैं दे रब अगेंस्ट ईच अदर एंड दैट कैन कॉज द पेन। उसे कहा जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। द थर्ड टाइप ऑफ आर्थराइटिस इज द गाउटी आर्थराइटिस। और गाउटी आर्थराइटिस क्यों होता है? तो इट इज ड्यू टू excessive metabolism of प्यूरिन्स। प्यूरिन्स के मेटाबॉलिज्म से एमिनो एसिड्स यूरिक एसिड बनता है और यूरिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है जॉइंट्स में एंड दैट कैन ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द पेन, जिसे गाउटी आर्थराइटिस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये सारे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। इसके अलावा कैंसर है जिसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है, उसे भी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस में गिना जाता है। सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस which you have to prepare. From the next lecture we will start with the topic of the immunity.